Bismillahirrahmanirrahim. So very warm welcome today in the third lecture of irrigation engineering. And basically this is first lecture from my side. The first two lectures were taken care by engineer Suhail Iqbal. He is a teaching fellow with us. And by the way, have you gone through the book? Are you reading also some relevant book for the design Yes, of sir. irrigation channels? What is the name of the book? Irrigation and Hydraulic Structures by Professor Dr. Iqbal. Yes, Irrigation and Hydraulic Structures by Iqbal Dr. Ali, Iqbal. Yes, sir. Dr. Iqbal Ali. And in that book, I think it's a very easy written book. Yes, actually clear. And the procedures for all type of channel design, those are given in a very nice manner. So I would suggest that you should again go and read that book, okay? And you have to solve all examples which are given in the book. And once we design the irrigation channels, we must be knowing the various type of channels. Starting from the head regulator of the main canal to the field. So what are the various categories of the channels, by the way? What is the name of the irrigation channel which is taken off from barrage or headwork? What is the name of the channel which is taken off from the barrage or headworks? Which is the biggest canal? Sir, I think maybe main canal. Oh yes, you are right. That is the main canal. And then the main canal, many branch canals are taken off from the main canal. And from each branch canal, many distributaries channels, they are taken off. And from many distributary channels, miners are taken off. Usually, how do we supply water to the agricultural lands? Through water courses. Water courses, very small channel, which is rectangular in shape, to which we call in Punjabi, what we call it? Water course. Khaliyan. Khala. Yes. So Khala is water course. And this water course is government owned or farmer owned channel. The government owned. This is farmer owned. Government owned. Farmer No. owned, sir. Farmer owned. Okay. तो the जो irrigation channel है आखिरी जो government own है, what is its name? Minor. Minor is the irrigation channel. So we being civil engineers, we have to design these channels. Maybe the main canal, branch canal, then the distributary and minors. Please remember that we never take off these water courses from main canals and branch canals. We take outlets and water courses from distributaries and miners. All right? Is it clear? Okay. Now, as far as the design of the channels, irrigation channels is concerned, there are two broad types of irrigation channels. Number one are the lined channels, and number two, unlined channels or alluvial channels or earthen channels. Okay? Yes, sir. So have you finished the design of both? I mean the lined channels and unlined channels? Have you carried out the design of lined channels? Lined channels means a lining is provided at the bed and the sides
That lining material may be the concrete, maybe brick lining, maybe the stone lining, or any other type of the lining. So what do you think? Which channel design is more easy? कौन सा channel design easy? Line channel is more easy. Yes, why? उसमें काफी पैरामीटर्स हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं. No. Let us discuss in this way. In case of unlined channels, what are the major problems in design? दो major problem है. Major problem is the. Yes, please. Sir, major problem is the surface roughness with the passage. No. I am talking about unlined channels, जिसको unlined channel कह दें, earthen channel कह दें, या alluvial channels कह दें. That is the same thing. In case of unlined channels, what are the two main problems which we have to address while designing? Seepage. Covering. Okay, there are two main problems. What are those? Number one is deposition of sediments, and number two is covering. Okay, whenever we design wrongly an earthen channel, what could happen? Either the sediments will deposit inside, and what will happen when the sediment will deposit inside the channel? It will reduce the cross-sectional area of the channel. Cross-sectional area को कम करेगी. Yes, sir. And the stage is fixed. In case of irrigation canals, we cannot raise the stage. For the same stage, and if the area is reduced, cross-sectional area, what will happen to the discharging capacity of the channel due to this sediment deposition? So it will be reduced. That will reduce. So it's one of the major problem. And what is the next one? Is covering. Your channel has a cover. So now the cross-sectional area has increased as compared to the designed cross-sectional area. And due to this covering, now when the same discharge will be supplied to the channel, what do you think? Can you maintain the same stage, which was designed stage, or it would be lower than that? So it will be lower than that. Design when stage. It will be lower than that, so it means what will happen to the head, which causes the flow in the outlets? So it will be reduced. It means ultimately what will happen? The command of the canal will reduce. Command means the area which it can irrigate, that will reduce because it has a lower head, because the stage has reduced. So these are the two main issues in the design of unlined channels, which we need to address. Okay. But what about the line channels? Line channel has only one problem. What is that? Line channel का कौन सा problem है भाई? एक problem है. Which is that one? The deposition of sediments. है ना? Deposition of sediments. So if the sediment they are deposited, again, what will happen? It will reduce the cross-sectional area of the channel, and then finally will reduce the discharging capacity of the channel. But what about covering? Do we have a covering issue in case of line channel? Water while moving, can it cover a lined surface? I think no, sir. No. Answer is no. So it means in case of line channel, we have only one problem. And and how we can avoid deposition of sediments on the bed of the channel?
by having enough velocity of water in the channel. है ना? Our velocity of water should be such that the sediments or silt in the channel should be kept in suspension. When it is suspension, it will be carried away by the channel. Okay. So how we can do that? By adjusting the bed slope of the channel. If we will slightly increase the slope of the channel, the velocity will be much higher. It will increase. And then it will keep everything, all sediments in suspension. And nothing will get deposited. So only we have to take one consideration in case of line channels. All right. Now, by the way, can anybody tell me how we can design lined channels? कैसे डिजाइन करें? That is more easy to design line channels. कौन सी थ्योरी से डिजाइन होगा लाइन चैनल? या बताओ तो सही. Shall I use कैनेडी थ्योरी यूज करूं? और लेसिस भी यूज कर सकते हैं, वही उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है. और लेसिस भी यूज कर सकते हैं. No, line channels are not designed using these regime theories. These regime theories are for the design of unlined channels or alluvial channels. Okay? तो वो हमने यूज नहीं करनी. फिर क्या यूज करना है? In case of line channels, we can directly use Manning's equation or Chaz's equation. Because we know very well the Manning's coefficient of roughness. And there is no scouring issue in case of line channel. So line channel we can design by using the equation of discharge, area into velocity, where velocity we can compute either by Manning's equation or by Chaz's equation. I think you know very well what is Manning's equation. Well, in Manning's equation, V is equal to 1 over n, r raised to 2/3, s raised to 1 by 2. ऐसा ही है? Yes, sir. Yes, sir. And in case of Chaz's equation, Chaz's equation, V is equal to C under root R S, where R is the hydraulic radius, which is ratio between area of flow and wetted perimeter. Okay. So is it clear how we have to design line channels? Yes, sir. Yeah, very easily. We will not use any regime theory. Neither we will use rational method. What we will do, we will simply use the either Manning's equation and Chaz's equation or Chaz's equation, and we will compute the discharge, area into velocity, and we will use certain dimensions, and we will check that this are and we know the Manning's n value for various lining materials. Concrete के लिए क्या value होती है n की? If it is brick lined, what is the value of n? If it is stone lined, what is the value of n? And in tabular form you can get from any books, and you can see and select the value of Manning's n. So by the way, when we say design of a channel, if I want to design a channel, how many things I have to design? मैंने क्या क्या डिजाइन करना है, कौन कौन सी चीजें मालूम करनी है? Yes, please let me know. So we are required to design the cross section of the channel, depth of flow of the channel, discharge flowing through the channel. No, देखो discharge हमने नहीं बता, discharge तो given है हमें. In the problem they will give the data कि this much discharge, for this much discharge design a channel. ठीक है? So
if we want to design a channel, we have to design 6 parameters. 6 parameter design करने हैं हमने. Number 1, what would be the depth of flow? Capital D क्या होनी चाहिए? Number 2, what would be the bottom width of the channel? Usually irrigation channels, they are of what shape? कौन सी shape होती है? Rectangular, sir. Trapezoidal channels. Irrigation channels, government owned irrigation channels, they are usually trapezoidal in cross section. Water course is rectangular in cross section. Okay, तो सबसे पहले हमने क्या है, depth of flow. We have to compute the depth of flow in the channel. Number 2, the bottom width of the channel. Number 3, the top width of the channel. Number 4, what should be the side slope of the channel. Number 5, what should be the longitudinal slope of the channel. And number 6, how much we should provide the free board to the channel. I think, do you know what is free board? Yes, sir. What is that? Sir, it is a space which we usually left above Ajay? the. Sir, it is a space which we usually left above the pond level. For in case if there is a kind of fluctuation in the flow, that it can be compensated in the stream. Yeah, actually this is the vertical distance between the crest of the bank, maybe right bank or left bank, crest of the bank, अभी बैंक नहीं, वो जो embankment है उसकी crest of the bank and full supply level in the canal. Canal में full supply level है और ये हमारा क्रॉस सेक्शन है. तो यहाँ पर जो crest level of bank और जो vertical distance है between the full supply level in the canal, so that vertical distance is called as free board. By the way, how do we, तो ये 6 चीजें हमने निकालनी है जी. अगर हम ये 6 चीजें दे रहे हैं निकाल के, तो हम क्या कर रहे हैं? We are designing an irrigation canal. सर रिपीट कर सकते हैं सर, ये 6 चीजें दोबारा रिपीट करते हैं. Depth of flow, number 2 bottom width, number 3 top width of the channel, capital D जिसको हम लिखते हैं. Number 4 side slope. ये by the way, ये जो side slope है, side slope, it should depend on what? Let's say पहले मैं बता देता हूँ, then we will discuss it again, huh? And number 5 longitudinal slope of the channel. And number 6 free board. ये 6 चीजें हमने डिजाइन करनी है. हाँ जी, is it clear जी? Yes, sir. Okay, ये जो side slope है, side slope, it depends on what? थैंक यू सर. आवाज नहीं क्लियर, दोबारा बोलें. Yes, please. Can you repeat your what you were saying? So he was saying thank you, बाबू thank you कह रहा था. क्या कह रहा है? Thank you. Thank you. Okay. तो ये जो side slope of channel है, particularly earthen channel, alluvial channel का soil के angle of repose पे और उसके parameters पे depend करता है. किस पे depend करता है? तो soil के parameters पर कि उसका angle of repose कितने या maybe bearing capacity. Yes, mainly it depends on the angle of repose of the material of the bank. बैंक का जो मटेरियल है, एम्बैंकमेंट का जो मटेरियल है जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है? अगर हम एक्सकवेट कर रहे हैं तो जो नीचे मटेरियल है, उस मटेरियल का जो एंगल ऑफ रिपोज ऑफ सॉइल है,
उससे इसका स्लोप ज्यादा होना चाहिए साइड स्लोप या कम होना चाहिए? स्लाइटली। हाँ जी, कितना होना चाहिए? सर स्लाइटली कम होना चाहिए। Yes, very good. It should be slightly less than the angle of repose of soil, because at angle of repose of soil, the soil remains itself stable. That is the stable slope, है ना? और उससे थोड़ा सा कम होगा तो फिर क्या होगा? वो slope stable रहेगा. If you are providing the slope steeper than that, that slope will never remain stable. So the main thing is from soil mechanics or geotechnical engineering considerations, side slope we fix. So it depends on the material. Material is stiff or material is soft. So accordingly we fix the side slope. All right. जो soft material होगा उसका side slope ज़्यादा क्या होगा? Flat होगा, है ना? कम angle होगा. All right. Now come back to the design of lined channels. तो लाइन चैनल में हमने फ्री बोर्ड कैसे निकालना है? आपने पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा? नो सर, लाइन नहीं पढ़ा. Oh, अच्छा, free board. You don't know how to compute free board. So free board, that is equal to under root C times Y. यहाँ इक्वेशन मेरे ख्याल नहीं है. Okay, please write down. और ये this is given in the book of Dr. Iqbal Ali. So free board is equal to under root C times Y, where Y, what is Y? Y is the depth of flow in the channel, जिसको हम capital D भी कहते हैं, है ना? So that is the Y, depth of flow, जो आपने डिजाइन की है depth of flow. और what is C? C is a coefficient and its value is basically varies from 1.5 to 2.5. Okay? Yes, sir. And when it is 1.5, when the discharge through the channel is equal to 2.5 cusecs. Let me confirm. Sorry, C value is 1.5 to 2.5 and C is 1.5 when discharge is 20 cusecs. Q is equal to 20 cusecs. And C value is 2.5 when discharge is more than or equal to 3000 cusecs. Okay? So इसका मतलब है C की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 1.5 to 2.5. 1.5 के लिए 1.5 C हम कब यूज करेंगे? When the discharge is 20 cusecs. और 2.5 when the discharge in the channel is equal to 3000 cusecs or more than 3000 cusecs. So if our discharge of the channel is in between, then what we will do? How we will find the value of C? कैसे निकालेंगे? Sir, linear interpolation से. Yes, simply you will do the interpolation. Is it okay? Yes, sir. ठीक हो गया? तो जनाब under root C times Y, चाहे that you have to compute the free board. और C की वैल्यू 1.5 से 2.5 हो सकती है. और it depends on the discharge. अच्छा, अब ये हो गया कि जी by this way you have to compute the free board. Now anybody who will let me know that what is meant by the regime method? ये regime method से क्या मुराद है? अच्छा, before going to regime method,
I would refer your book, Irrigation and Hydraulic Structure by Dr. Iqbal Ali. It's example 4.1 जो इसमें दी हुई है. Have you solved it? Example 4.1 of the book. This is to design a lined channel. Lined channel का design दिया हुआ है. ठीक है? So you have to see this example 4.1 and you have to solve it. Then you will understand that how you can easily design a lined channel. उसमें ये freeboard वगैरह सारा कुछ निकला हुआ. All right? Yes, sir. ठीक हो गया जी. Now come to the regime methods. What are regime methods? Anybody can define me or explain me what is meant by regime methods? जी भाई. Yes. I think you have studied regime method. Today we want to study rational methods. So regime method, what is regime method? We should know it. हमें पता होना चाहिए है क्या यार regime method. तो मेरे ख्याल से इसमें ये होगा कि जो regime methods में हम एक stable channel का डिजाइन करते हैं. Yes. No, that's you are correct. Even by rational method हम stable channel design करते हैं. Using regime method we also design by stable channel. लेकिन approach का फर्क है ना, तो वो क्या approach है? Sir, empirical approach है. नहीं, what is that approach? पता तो चले. Basic approach क्या है? Regional in regime methods. Okay, there will be no silting and no scouring. This is true. This is even a rational method. Assumption इसमें भी यही है कि जब हम ना scouring हो ना deposition of sediment की. तो what to which method we will say that it is a regime method? कोई और बताए. देखो आज हम ना डिस्कशन चाहते हैं ताकि जो कुछ आपने पढ़ा है in the previous 2 lectures, so you should be able to demonstrate it, है ना. तो अगर मैंने regime method सारे पढ़ लिए हैं and if I don't know what this regime method actually is, तो इसका मतलब है कि there is some weakness somewhere. मैं बोल सकता हूँ ऐसे ही आगे. हाँ जी. Sorry. सर मैं भी एडिशन कर सकता हूँ अपनी बातों में वैसे ही. लेकिन मुझे आंसर नहीं पता, बट वैसे ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू. Yeah, I will give my point of view definitely. लेकिन अगर I want to hear from you. सर इसमें मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि जो regime method होते हैं ये ऑलरेडी किसी जो यानी कि ऑलरेडी मेड स्ट्रक्चर्स या ऑलरेडी मेड चैनल्स होते हैं यहाँ पे, स्पेशली किसी भी एरिया में उससे ड्राइव की जाती हैं. Okay. Actually, you know, the regime channel is one which neither scours nor silt. है ना, ये regime channel है. Basic definition ये है. तो regime method means कि there were some channels already existing over the globe, particularly in this Indo-Pakistan, and then the relationships were developed between velocity of flow and depth of flow and the discharge and depth of flow and the discharge and its width, etc. and its dimensions. Actually, those relationships which were developed from the stable channels, and those relationships were used later on for the design of the channels. So those methods are called as regime methods. Could you follow it? समझ आई है? Actually already कुछ channels ऐसे थे जो artificial channel बनाए गए और वो stable थे. Stable means non-silting, non-scouring, and their data was collected.
और उनका डेटा बनाने के लिए लिया गया और उसके बाद जो ग्राफिकल रिलेशनशिप्स उनमें बनाए गए बिटवीन वेरियस पैरामीटर्स एंड देन द रिलेशनशिप्स वर डेवलप्ड। जैसे कैनेडी है तो कैनेडी सिंपली क्या है, v इज इक्वल टू सी टाइम्स d पावर n, है ना। 0.6। तो डेप्थ और वेलोसिटी का रिलेशनशिप दैट वाज डेवलप्ड। ये किस चैनल से डेवलप किया गया? सो अपर बारी द्वाब कैनल, यूपीडीसी, अपर बारी द्वाब कैनाल। So these type of methods are called as regime methods. It means already existing stable channel थे, non silting non scouring channel practically थे, और उधर से हमने डेटा लिया, डेटा लेके इक्वेशनें बनाई, उस इक्वेशंस की बेस पे, उन फार्मूले की बेस पे जो हम डिजाइन कर रहे हैं, that is called as regime methods. ओके तो आपने जो regime method पढ़े हैं, कितने पढ़े हैं? 2 सर। 4 regime methods. Number 1 Kennedy method. Kennedy ने किस साल में ये थ्योरी दी अपनी Kennedy थ्योरी? In 1895. 1895 में दी ना? यस सर। और उसने किस कैनाल का डेटा यूज किया? यूबीडीसी का। The next is Lacey's theory या Lacey's regime method. The next is Simon's and Albertson method, and the next is Blanch method. 4 मेथड है regime method जो आपने पढ़े हैं। Is it okay? यस सर, 2 पढ़े हमने अभी तक शायद। हाँ जी, अभी तक शायद 2 स्टडी की हैं, बाकी 2 नहीं पढ़े। 2 नहीं पढ़े? अच्छा, वो नहीं पढ़े। ओके, ऑलराइट, तो फिर हम पहले वो पढ़ेंगे, है ना। मुझे उन्होंने बताया कि 4 पढ़ लिए। मे भी मैं भूल रहा हूँ, कोई कंफर्म कर दे। सर उन्होंने पढ़ाए थे लेकिन ओवरव्यू अच्छा, टाइप ही चलें, था ठीक उनका, है, ठीक डिटेल है। नहीं पढ़ाए थे। बट अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट यू मस्ट रीड बुक। इसमें चौथा चैप्टर है इरिगेशन चैनल्स का, वो आप वहाँ से पढ़ें, बड़ी आसान लिखी हुई है किताब। यू रीड इट, द होल डिज़ाइन स्टेप्स आर गिवन, कैसे कैलकुलेशन करनी है उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। यू मस्ट सी द बुक एंड रीड द बुक, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो मेन कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। सो आई थिंक वी हैव डिस्कस द रिजीम मेथड्स के रिजीम मेथड क्या होता है, ठीक है। इसकी बेसिस क्या है? एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑफ स्टेबल चैनल्स, उसकी बेस पे वी डेवलप इक्वेशंस, और वो इक्वेशन और फार्मूले हम यूज करके जो चैनल डिजाइन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिजीम मेथड। इज इट फाइन? यस सर। Okay. Excuse me, sir. Yes. Sir, my question is it really necessary that the stable channel should be artificial or it may be natural? Another thing is that what are the parameters which we can say that this is a stable? Actually, you are talking about the Lacey's theory, huh? Yes, sir. Actually, Lacey's theory gives concept of regime channel in a much broader way, not like Kennedy theory. Kennedy इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, लेसी बहुत डिटेल में जा रहा है regime के। Okay, what the Kennedy ने तो 1895 में उसने he has used that data and developed those equations and gives his methods. And UBDC, when it was constructed, पता कब बनी थी? In 1850, 1850 में रिवर रावी से ये निकाली गई, माधुपुर हेडवर्क से, टू सप्लाई वाटर फ्रॉम माधुपुर टू अमृतसर एंड टू लाहौर। ओके, सो इन 1850, और कैनेडी साहब ने कब ये काम कर रहे हैं?
in 1895. तो कितना लंबा डेटा था कैनेडी के पास? 5. हाँ जी, 45 years. 45 years, about Yes, sir, 45. चलो 3-4 साल का डेटा अगर नहीं भी लिया होगा तो 40 साल का डेटा था इसके पास, एंड एट डिफरेंट 20 सेक्शंस पे कैनेडी के पास, एंड देन द कैनेडी हैज डेवलप्ड दीज रिलेशनशिप्स। ठीक है ना। अब आए आपके सवाल पे। लेसी डिटेल में बता रहा है, वो 3 रिजीम कंडीशंस बता रहा है। एक कहता है ट्रू रिजीम, इनिशियल रिजीम एंड फाइनल रिजीम। आई थिंक यू हैव स्टडीड इट, आई होप सो, है ना। व्हाट इज द ट्रू रिजीम? ट्रू रिजीम किस चैनल में आ सकता है? ट्रू रिजीम ओनली कैन कम अंडर सर्टेन कंडीशंस। वो क्या कंडीशन है कि जनाब जो डिस्चार्ज है ना, वाटर डिस्चार्ज, वो यूनिफॉर्म रहे चैनल में। तो जो नेचुरल चैनल होते हैं उसमें डिस्चार्ज यूनिफॉर्म रहता है? नो सर। हैं? नो सर। नो सर। नहीं रहता। अच्छा, दूसरी इसकी क्या कंडीशन है ट्रू रिजीम की? जो सेडिमेंट डिस्चार्ज है कैरीड बाय द वाटर इन द चैनल, इट शुड रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? जो ग्रेड है सेडिमेंट का इन द चैनल, इट शुड रिमेन सेम, यूनिफॉर्म कांस्टेंट रहना चाहिए। एंड नंबर फोर्थ कंडीशन, जो फ्लो है इन द चैनल, इट शुड बी यूनिफॉर्म। तो ये 4 कंडीशनें बता रहा है टू ए चैनल टू हैव ए रिजीम चैनल। ठीक है। तो ट्रू रिजीम जो है ऐसे हो, अगर कोई नेचुरल चैनल है और उसमें कांस्टेंट डिस्चार्ज हो, दिस इज ओवर सपोजिशन, और उसका सिल्ट लोड भी कांस्टेंट रहे, और एंड यू नो उसका सिल्ट ग्रेड भी कांस्टेंट रहे, उसमें डिस्चार्ज भी यूनिफॉर्म रहे, तो वो चैनल ट्रू रिजीम में होगा। बट यू नो in natural channels the discharge changes, and that's why जो नेचुरल चैनल्स हैं दे meander, वो meander हो जाते हैं, है ना। यू meander होते हैं। meander क्यों होते हैं? दे वांट टू बैलेंस देयर एनर्जी। क्यों भाई? ए meander चैनल जो है उसका स्लोप बढ़ जाता है चैनल का या कम हो जाता है आफ्टर meandering? कोई बताएगा मुझे? एक चैनल स्ट्रेट मूव कर रहा था फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड देन इट हैज meandered, यूं meander कर गया। तो दोनों केसेस हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकती है वेलोसिटी। नो 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 नो। हाउ बाय द वे स्लोप इज टू बी कंप्यूटेड? स्लोप हम कंप्यूट कैसे करते हैं? डेल्टा जी, चेंज इन एलिवेशन, डिवाइडेड बाय एल, लेंथ ऑफ द चैनल। Let's say A and B 2 points, they have the same elevations. What has changed? Only length. जब straight था channel तो length कम थी तो slope ज़्यादा होगा। When it has meandered तो slope बढ़ गया। तो ये meandering क्यों कर रहा है channel? Meandering इसलिए कर रहा है कि उसके पास energy ज़्यादा थी, तो वो regime में नहीं था, तो वो meander कर रहा है। ओके, सो नेचुरल चैनल्स दे कैन स्कावर टू कम इन regime। तो ट्रू regime क्या चीज़ है? ट्रू regime है कि जनाब ओवर चैनल इस ना स्कावर करे एक regime में आने के बाद। वो कब हो सकती है? उसकी कंडीशंस हैं, दोस कंडीशंस आई हैव एक्सप्लेन यू। द डिस्चार्ज इज constant, the silt grade is constant, it does not change with time, the sediment discharge remains constant, the discharge remains uniform, etc. So practically none of the channel we can say is in true regime। ठीक है, ये बड़ी हाइपोथेटिकल बात है कि कोई चैनल ट्रू regime में हो। हाँ, इनिशियल regime में हो सकता है। What is the initial regime? For example, we have designed a channel and उसका slope वो गलत था, वो regime condition में नहीं था। शुरू में क्या हुआ, maybe
सब कुछ फ्रॉम अर्ली पार्ट कुछ स्कावरिंग हो गई, जब स्कावरिंग होगी अर्ली पार्ट से तो वो कहाँ डिपॉजिट होगी? ऑन लेटर पार्ट। उससे बेड स्लोप को क्या होगा? बेड स्लोप हैज टू रिड्यूस। देखा ना, पहले स्लोप ज्यादा था, यहाँ से स्कावरिंग हो गई, इधर डेपोजिशन हो गई, तो बेड स्लोप इज रिड्यूस्ड। तो वो इस तरह स्लोप को चेंज करके इनिशियल रिजीम में आ सकता है। ओके, so these concepts are given basically by the Lacey. Is it clear? सर काइंडली Yes, sir. इनिशियल रिजीम को थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा? हाँ जी, इनिशियल रिजीम को इसको थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? initial regime means that we have designed a channel, okay, and that channel was not properly designed as a regime channel. वो बिल्कुल regime में नहीं था। रिजीम का क्या मतलब है? वो अपने आप को स्टेबल करेगा ना चैनल आफ्टर सम टाइम। फॉर एग्जांपल उसका स्लोप जरूरत से ज्यादा हमने दे दिया था, बेड स्लोप, अब वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज्यादा होगी। जब शुरू में ही क्या करेगी ज्यादा वेलोसिटी? इट विल स्कवर द बेड, अर्ली पार्ट विल बी स्कवर्ड एंड लेटर पार्ट पे डेपोजिशन हो जाएगी, तो उससे बेड स्लोप विल चेंज, ज्यादा बेड स्लोप कम हो जाएगा, उससे वेलोसिटीज को क्या होगा? Velocities of the flow will reduce. The channel will automatically come to the stable condition after some time. So this type of the regime is called as initial regime of the channel. Is that okay? Yes, sir. All right. Thank you. So now I think we are at a stage to start rational method. So what is rational method? You know, in this method, dimension of the channel, by the way, what are the main dimension of the channel? Depth of flow, bottom width, top width, side slope, and the longitudinal slope. They are determined by considering the basic principles of hydraulics for flow of water and sediment transport under dynamic equilibrium. So this is rational approach or rational method. This is quite different as compared to the regime method. Regime में क्या approach थी? If we have a data of the regime channels, stable channels, and just develop the relationships between the depth of flow and discharge or velocity and so on, and the width of the bottom width and the velocity etc, वो रिलेशन हम बना के उससे डिजाइन कर रहे थे, तो वो रिजीम मेथड था। रैशनल मेथड जो है प्योरली बाय कंसिडरिंग हाइड्रोलिक पैरामीटर्स। ओके, इज इट क्लियर? This is a rational Yes, way of thinking. जी, yes, please. Time भी, हाँ जी. Yes, you are welcome. What is your question? बोले. तो वो कुछ भी नहीं कह रहा था, वो आपको बस रिकन्फर्म कर रहा था, समझ आ गई है। Okay. So is it clear that what is rational method? In rational method, you know, we find the dimension of the channel. Yeah, we design the channel dimensions like the bottom width, side slope, top width, depth of flow, longitudinal slope, by considering the hydraulics of the flow and sediment transport. तो ये दोनों चीजें कंसीडर करते हुए जो हम चैनल डिजाइन करेंगे वो कौन सा मेथड होगा? दैट वुड बी द रैशनल मेथड। अच्छा, इसमें हाउ वी कैन डिजाइन an alluvial channel. You know, we have the two main problems of the alluvial channel. One is the scouring of the channel, and second is the cell deposition in the channel. तो वो दोनों को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं? हमारी वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितनी होनी चाहिए बाय रैशनल मेथड? देखें, एक वो वेलोसिटी है फ्लो की जिससे
बॉटम पे जो सेडिमेंट पार्टिकल पड़ा हुआ है ना वो मूव करना शुरू कर देगा. ओके, so that is called as the critical velocity. And I think at undergrad and in hydraulic engineering you might have studied it, the concept of the critical velocity for sediment transport, है ना. एक critical velocity और पढ़ी थी हमने channels में, वो और चीज है. So for sediment particle के लिए critical velocity क्या होगी? वो वेलोसिटी जिस पे जो सेडिमेंट पार्टिकल पे जो अपोजिंग फोर्सेस हैं और रेजिस्टिंग फोर्सेस हैं वो बराबर हों. ठीक है, so that is called as critical velocity for sediment particle. अच्छा, अगर हमारा velocity of flow in that channel is slightly less than that velocity, तो उससे क्या होगा? जो पार्टिकल्स हैं on the bed and side, would they move? वो मूव करेंगे? They will not move. So this is a rational approach. What about the and how we can keep all sediment particles in suspension? अच्छा, by the way मुझे ये बताएं पहले, जो बेड पे sediment particles हैं in a channel, are they coarser? Are the sediments which are moving in suspension, are they coarser? कौन से मोटे the bed particles coarser. The particles which are on the bed. जो sediment particles हैं they are coarser, and the sediment particles which are in suspension they are finer. Okay, so if you have selected the velocity of flow in such a way that the sediment particle on bed is not moving, और फिर वेलोसिटी हम ऐसी सिलेक्ट कर लें कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं विच आर स्मॉलर इन डायमीटर, दे शुड रिमेन इन सस्पेंशन, तो वो डिपॉजिट होंगे? नो सर, नो. सो दिस अप्रोच of the design of irrigation channels is called as rational approach. इसमें हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलिक्स ऑफ फ्लो एंड सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट दोनों को कंसीडर कर रहे हैं और उससे हम डिजाइन कर रहे हैं. सो आई थिंक वी शुड स्टॉप टुडे because only 5 minutes are left and you might have to join other lectures and आपकी अटेंडेंस ली जाए पहले. तो if even you have any questions you can continue, आप सवाल पूछ सकते हैं.